news coming in. News coming in from ISRO now. ISRO is set to conduct a liquid bipropellant-based velocity rocket. trimming module is used. It has monomethyl hydrazine and mixed oxides of nitrogen as fuel and oxidizer respectively. The propellant of VTM also aids in the roll control during the SS2 and SS3 flight regime and control of pitch, yaw and roll during the coasting phase. SSLV has an encapsulated assembly comprising of VTM, satellites on a variety of payload adapters ensconced in the heat shield halves. The heat shield is of ogive shape made of composite with co-cured cork thermal protection system. Overall, the SSLV is 34 meters tall, 2 meters in diameter, and has a liftoff mass of about 100. Onboard computer in flight mode. SSLV का यह प्रथम प्रमोशन मुख्यतः 2 उपग्रहों को अपनी कक्षा में अंतक्षेपित करने का है। पहला EOS-02 जो कि 135 kg का माइक्रो सैटेलाइट भूप्रेक्षण उपग्रह है और इसे मध्य रेखा से 356.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर तथा 37.21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। EOS-2 के साथ एक और सहयात्री उपग्रह जिसे भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में AzaadiSAT नामक उपग्रह का भी प्रमोशन किया जा रहा है। AzaadiSAT को भी EOS-2 की ही कक्षा में स्थापित किया जाएगा। भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में AzaadiSAT नामक उपग्रह का भी प्रमोशन किया जा रहा है। AzaadiSAT को भी EOS-2 की ही कक्षा में स्थापित किया जाएगा। SSLV में उपग्रहों को प्रक्षेपण के पश्चात ऑर्बिट रेजिंग के प्रयोगों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। उपग्रहों को अंतक्षेपण में करीब 790 सेकंड का समय लगेगा। अब हम प्रमोशन से 2 मिनट की दूरी पर। The tracking of the launch vehicle during the flight is done by the ISRO Telemetry Tracking and Command Network called the ISTRAC. The SSLV-D1 EOS-02 being a southbound mission, 6 tracking stations are participating. They are Shar, Bangalore, Trivandrum, Port Blair, Singapore and Yattaragga. These tracking stations have overlapping visibility to track the flight trajectory and staging events. We are 1 minute 30 seconds from the launch. आज का मौसम यहाँ बदली वाला है। यहाँ जो दर्शकगण आए हुए हैं लॉन्च को देखने के लिए उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन प्रमोशन के लिए पूरी तरह अनुकूल है। -1 minute. Distract साम। अब हम 1 मिनट की दूरी पर प्रमोशन से -50 seconds. All sequences armed. -45 seconds. -40 seconds. -35 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Stop. Normal. P1 tracking. PT tracking. R2 tracking. P2 tracking. That was a brilliant liftoff, a sight to behold.
प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV-D1 लॉन्च व्हीकल का। SSLV-D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर। सभी तंत्र सुचारू रूप से काम करते हुए। बहुत ही रोमांच का पल है ये। प्रथम प्रमोशन SSLV-D1 का। Maiden launch of SSLV. The performance of first stage is as per the prediction. First stage performance normal. SHAR-1 as in main auto. Plus 1 minute. प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ। SHAR-2 as in main auto. वैज्ञानिक गण निरंतर नजर बनाए हुए हैं सभी आंकड़ों पर। Flight parameters and ground trace on your screens right now. Shar, Bangalore and Trivandrum telemetry stations tracking. प्रथम चरण का प्रज्वलन काल करीब 117 सेकंड का होगा। This 22.5 meter long stage is powered by HTPB based solid propellant, 87 tons mass. It generates a thrust of 2600 kilonewtons. During the SS1 action time of 117 seconds, the altitude of the launch vehicle crosses about 85 kilometers. प्रथम चरण के सभी तंत्र सामान्य कार्य करते हुए। Second stage ignited. First stage separated. अभी अभी आपने सुना रेंज निदेशक ने घोषणा की द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो चुका है तथा प्रथम चरण को पृथक कर दिया गया है। As per the announcement of the Range Operations Director, the second stage has started its operation, generating maximum vacuum thrust of 235 kilonewtons. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल करीब 221 Payload fairing separated. सेकंड का। ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। Trivandrum and Port Blair stations presently tracking. Plus 3 minutes. अब हम 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। There's a quick succession of several flight events. The SS1 separation, following the SS2 ignition, Second stage performance normal. and then the closed interstate separation, initiation of closed loop guidance for the flight, and of course, the dense atmosphere and 100 kilometers altitude has been crossed. The payload fairing also has been separated. यान की गति 3.35 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 228 किलोमीटर। Plus 4 minutes. इस घटनाक्रम में SS2 का प्रज्वलन काल खत्म होने के बाद करीब 90 सेकंड का कोस्ट फेज होगा। Second stage action completed. Current altitude is 260 kilometers. Coasting. 4 minutes 30 seconds past the launch time. इसे SS2 SS3 कंबाइंड कोस्टिंग फेज कहा जाता है। इस घटनाक्रम में अगली घटना होगी SS2 का पृथक्करण तथा SS3 का प्रज्वलन। Vehicle performance normal.
यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। Next flight event is the separation of the second stage, which has completed its operation. Second stage separated. Now we have got the confirmation that the second stage has been separated. Third stage ignited. जी हाँ, द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल तथा कोस्ट फेज पूर्ण करने के पश्चात पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण SS3 प्रज्वलित हो चुका है। Right now the SSLV is in its third stage regime. The carbon fiber filament wound case with 4.5 tons of HTPB based solid propellant loading, SS3 will propel the rocket from 333.6 kilometers to 356.5 kilometers. A significant delta V addition takes place. It is about 3.7 kilometers per second. That's the amount of velocity increase. SS3 का प्रज्वलन काल 112 सेकंड का होगा। इस दौरान यह निर्वात प्रणोद 160 किलो न्यूटन का उत्पन्न करेगा। Third stage performance normal. इस चरण के दौरान ही कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा सकेंगी। Plus 7 minutes. Singapore and Port Blair stations still tracking. The action time for third stage is 112 seconds, after which there will be a combined coast phase. Third stage action completed. तृतीय चरण अपना प्रज्वलन कार्य पूर्ण करता हुआ। Vehicle is in coasting. Presently, it's the regime of coasting. The third stage has completed its operation, but yet to separate from the ongoing 8 launch minutes. vehicle. Control for pitch, yaw, and roll being provided by the velocity trimming module thrusters. In about 3 minutes of coasting, there is a triple velocity addition and triple altitude gain. VTM will then operate and compensate for the velocity necessary for the injection of satellites and also the correct altitude. भारत इस साल को आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरह मना रहा है। भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ में पूरे भारत में तरह तरह से इसे मनाया जा रहा है। इसमें सभी ओर विकास और उन्नति की दिशा को दिखाया जा रहा है। यह पर्व इसरो में भी मनाया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ मिशन न सिर्फ एक नवीन प्रमोशन यान का प्रदर्शक है, बल्कि मिशन के उपग्रह आजादी सेट पर आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित हैं। We are 9 minutes past the launch time. Combined coasting in progress right now. यह मिशन एक और कारण से महत्वपूर्ण है। इस यान में सफर कर रहे आजादी सेट को हमारे देश के ही 750 स्कूली छात्राओं ने मिलकर बनाया है। इस तरह यह मिशन महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए वुमेन इन स्पेस के थीम को भी सहायक बन रहा है। VTM वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल वह टर्मिनल चरण है जो कि अंतःक्षेपण की पूरी स्थितियां प्राप्त करेगा। Plus 10 minutes. You are watching us live from the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota.
This is a maiden launch of SSLV-D1 EOS-03 mission. अभी आप ऑन बोर्ड कैमरा की मदद से देख पा रहे हैं EOS-2 का पृथकीकरण तथा अंतःक्षेपण इसके उद्दिष्ट कक्षा में। VTM का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसे बंद किया जा चुका है। अभी उपग्रह के प्रमोशन की जानकारी आ चुकी है। EOS-2 को सफलतापूर्वक अंतःक्षेपित कर दिया गया है। Following the combined coast phase, the VTM ignition, cutoff and EOS-02 separation, AzaadiSAT separation, these flight events have taken place. जी हाँ, इसकी पुष्टि कर दी गई है। EOS-2 तथा AzaadiSAT को उनके उद्देश्य कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। The outcome of the mission is yet to be announced by the Range Operations Director. मिशन की सफलता की औपचारिक घोषणा कुछ ही क्षणों में की जाएगी। Viewers can stay tuned to the ISRO media portals to know the outcome of the mission of SSLV-D1 EOS-02 mission.
Visuals from the mission control centers on your screens right now. The experts looking at their monitors very intently. आज़ादी सेट एक क्यूब सेट है जिसका भार करीब 8 केजी का है। इसमें कई सारे फेम्टो एक्सपेरिमेंट्स के लिए विभिन्न नित भार लगे हुए हैं। इन नित भारों को स्पेस किड्स इंडिया द्वारा एकीकृत किया गया है। अभी तक उपग्रह से संपूर्ण संकेत नहीं आए हैं। So ISRO creates a history there, launches its maiden SSLV. It's a maiden SSLV mission, that's a small satellite launch vehicle mission. And one of the satellites that it's carrying has been made by students. AzaadiSAT, the student satellite, and one other satellite are being carried by the SSLV, that's the small satellite launch vehicle. And it takes off successfully. We were just watching, and you viewers were just watching that launching of which took place from Sriharikota in Andhra Pradesh. It has placed two satellites, EOS-2 and AzaadiSAT, into a 356-kilometer orbit on its maiden flight. So a very successful mission there by ISRO, another feather in its cap. We had shown you the final countdown which began for the launch of SSLV-D1. It was carrying the EOS-2 and AzaadiSAT. Flight of SSLV-D1 just now completed. The SSLV's all stages performed as expected. The first stage performed and separated. The second stage performed and separated. The third stage also performed and separated. And we had in the terminal phase of the mission some data loss is occurring, and we are analyzing the data, and we will come back on the status of the satellites and as well as the vehicle performance soon. So until then, please bear with us that we are currently in the process of analyzing the data to conclude on the final outcome of the mission with respect to a stable orbit achieved or not. So please please wait, and we'll come back. Thank you so much for your patient viewing of this live telecast from SDSA SHAR. Thank you so much once again. So ISRO makes history there, and as we were just watching a short while back,
Ever since the countdown began, much anticipation for this historic feat that ISRO has achieved. It's another feather in the Space Research Organization's cap. It's a historic launch of its maiden SSLV mission. That's a small satellite launch vehicle mission. Right now it's carrying 2 satellites, one of which has been built over the years in commemoration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. It's called the AzaadiSAT. ISRO's tribute to Azadi Ka Amrit Mahotsav. And Republic bringing you those visuals and that entire launching of the SSLV. So ISRO makes history. All the details here on Republic. Minute-to-minute updates as the world watches India Space Research Organization creating history.